request to stop the music. Team Explorers, you can start your presentation. Good evening, judges. We are Team Explorers. We will speak on our initiative, Farm Links. Let's introduce our team. Myself, Mayur Somani, Samar Darak, Om Tapriya, Akshat Rati, Om Sarda. Now let's discuss about our problem. Meet a small farmer, Sampadrao Patil. Sampadrao Patil एक किसान है जो बहुत अच्छे क्रॉप्स ग्रो करता है, पर उसके क्रॉप्स की क्वालिटी ठीक नहीं रहती, जिस वजह से फार्मर्स उस पर बिलीव नहीं करते। और वो प्रूव करने के लिए उसके पास कुछ प्रॉपर सिस्टम नहीं है और किट भी नहीं है, जिस वजह से वो चेक कर सकते। सॉरी, No problem. Calm down. Take your time. sir, just No problem. sorry. Okay. Good evening, judges. Sorry for interruptions. The problem of the farmers are like small-scale farmers. There are problems like they doesn't know what the selling price of a crop that the neighbor sold. The price can't be distributed. Like the middleman take profit more than the producer, and also the seller can't distribute. It's can't. किसान अपने मतलब क्रॉप को प्रूव नहीं कर पाता है, जैसे वो ग्रेड ए का क्रॉप है, ग्रेड बी का क्रॉप है, ग्रेड सी का क्रॉप है, और मिडल मैन उसको ग्रेड बी बताए तो उसको ग्रेड बी पे ही स्टक रहना पड़ता है, ग्रेड ए पे वो शिफ्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसको मतलब कम प्रॉफिट होता है। उसका ग्रेड ए का क्रॉप रहा तो भी वो उसको क्वालिटी प्रूव नहीं कर पाता है, उसके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसको पता नहीं है मतलब लार्ज स्केल पे फार्मर्स को क्या रेट मिल रहा है और उसको क्या रेट मिल रहा है, मतलब उसके नेबर को भी क्या रेट मिल रहा है उसे पता नहीं है, उसे ज़्यादा रेट मिल रहा है, कम रेट मिल रहा है। और पेमेंट इश्यूज के बहुत से जैसे कौन पहले पे करेगा, जैसे अगर उसने डायरेक्टली फैक्ट्री से कांटेक्ट किया, लार्ज स्केल फार्मर है, तो हु विल पे अपफ्रंट, मतलब कौन पहले पे करेगा, जैसे मतलब किसान पहले माल डिलीवर करेगा या पेमेंट पहले आएगा। तो दिस इज द बिगेस्ट इशू द फार्मर्स फेस, and that we are solving using our solution product. Now Samarth, Akshat will continue. So now you have had a look at the problems. So why not have a look at the solutions? So the first thing we talked about was the payment uncertainty due to the trust issues between the farmer and the buyer. So to solve that, we have generated a system that does payment via an escrow account, which basically means that the money is safe in the escrow account until the delivery is complete. So it's nothing like कि डिलीवरी होने के बाद अगर उसका कुछ क्वालिटी का तकलीफ हो गया तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको मिलेंगे. Second is lack of transparency, and to solve this we have been using Hedera Hashgraph technology to ensure full transparency for the farmer. That is, उसको अपना सब सर्टिफिकेशन दिखेगा, उसके क्रॉप का क्वालिटी क्या है एंड ऑल अदर डिटेल्स उससे छुपाए नहीं जाएंगे जो मिडलमैन यूजुअली छुपाते हैं. नेक्स्ट इज द वेरिड स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी वेरिफिकेशन. अलग अलग स्टैंडर्ड है ये बताने को कि क्रॉप कितना प्योर है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमने एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड जनरेट किया है जो क्वालिटी वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको सपोर्ट देता है आपकी क्वालिटी के अश्योरेंस के लिए. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉल्यूम मिसमैच. जितना बायर को चाहिए रहता है अक्सर उतना नहीं रहता है फार्मर के पास. फार्मर क्विंटल में उगाता है, बायर को टन में चाहिए. सो टू सॉल्व दिस, जो फार्मर्स सिमिलर क्रॉप उगा रहे हैं जिनकी क्वालिटी भी सिमिलर है उनको एग्रीगेट करेंगे हम ताकि जो डिमांड्स है बायर की वो फुलफिल हो सके. सो अभी बात करते हैं हमारा 90 डे प्लान क्या रहेगा. हमने उसको 3 फेज में डिवाइड किया है. फर्स्ट 30 डेज, देन द नेक्स्ट 30 डेज एंड द नेक्स्ट 30 डेज. सो द फेज 1 0 to 30 डेज में हम क्या करेंगे. वी बिल्ड द बेस बाय पार्टनरिंग विद ऑल द FPOs ऑफ अ रिस्पेक्टिव रीजन to onboard around 10 to 15 farmers approximately.
FPOs ही क्यों? क्योंकि FPOs फार्मर्स को हेल्प करता है तो प्लेटफॉर्म के साथ थोड़ा फेमिलियरिटी गेन करने में, उनको समझाता है अच्छे से, क्योंकि FPO भी एक फार्मर ही चलाता है और एक फार्मर ही फार्मर का साथी है, और उनको गाइड करता है ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग ऑफ देम, मतलब उनके जो रजिस्ट्रेशन KYC ऐसे डिटेल्स होते हैं ये सब FPOs फाइल करता है, और इससे जो हमारी डिमांड होती है, जो हमारा सप्लाई होता है, वो दोनों वैलिडेट होता है थ्रू इनिशियल बायर डिस्कवरी, जब हम पहले बायर्स ढूंढते हैं, एंड पायलट ऑर्डर्स रन करेंगे टू टेस्ट द रियल वर्ल्ड फिजिबिलिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट. द नेक्स्ट फेज इज व्हेन वी एक्टिवेट द मार्केट प्लेस बाय ऑनबोर्डिंग बायर्स and enabling direct farmer to buyer connections, and we aim at completing around 20 to 30 transactions, and through this it will help us in validating pricing accuracy and the logistic efficiency after using our product. The last phase is scale and monetization, where we scale operations to around 45 to 50 or more farmers and 15 to 20 buyers. We increase the order frequency and introduce additional revenue streams, and we aim to achieve more than 50,000 rupees in revenue. Now revenue से याद आया revenue model. So हमारा जो primary revenue model है वो आता है कि at the checkout stage जब buyer checkout करेगा पैसे देने, तो उसमें 8 to 10% हम fee add करेंगे, और वो fee हमें help करेगा access करने जो verified farmer की listings है, और तो और secure payment करने में हमारी मदद करेगा, ensuring convenience and trust in the buying process. We also think of generating revenue through targeted advertisements of agriculture products on our platform. उसकी जो ad pricing है हम ऐसे calculate करेंगे कि जो base rate है into the number of users that are active that interact on our website, into the engagement rate of the users, into the duration in minutes that an average user spends on our website. So this ensures fair pricing based on the visibility and interaction of the advertisement put on the website. Next is we will earn by facilitating awareness campaigns that are run by government bodies as well as private organizations that will use our offline and online outreach for their advertisement. In return, we will charge a fee for leveraging our farmer network and ensuring an effective campaign in terms of reach and engagement. We aim to provide logistics support by connecting farmers with nearby transporters. For every successful transaction, we will charge a 5% fee from the transporter after successful delivery, ensuring that efficient delivery services will create an additional and scalable revenue for the platform. We also aim to collaborate with insurance companies to offer crop insurance to farmers that will be set within a predefined coverage limits, that is the minimum insurance limit and the maximum insurance limit. By simplifying access and onboarding farmers, we charge a 10% fee on the monthly premium, creating value for insurers, the farmers, as well as the platform. All of these, the last 2 points that are said are currently in future scope. We are still thinking about it. So, Last 2 minutes for presentation. So why us? So people often ask कि क्यों तुमने लिया एग्रीकल्चर? हम फार्मिंग बैकग्राउंड से नहीं है, सो हमारे पास कुछ एक्सपर्टीज भी नहीं था, पर हमारे पास एक चीज़ थी जो बाकियों के पास नहीं है, वो है क्यूरियोसिटी. जब हमने शुरू किया इसमें झांकना थोड़ा ये एग्रीटेक स्पेस में, हमें समझा कितनी इनएफिशिएंसीज और प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है. लैक ऑफ ट्रस्ट, अनक्लियर प्राइसिंग और मिडलमैन पे जो डिपेंडेंस था फार्मर्स का, वो हमें एकदम उभर के दिख गया. Or instead of assumptions and assuming solutions, we have been actively trying to understand the problem better by observing how the mandis and the farmer cooperatives work and interacting with the people in the complete ecosystem. This process comes from the this project comes from the exact same learning process as we continue to validate and improve it with real-time feedback from the people we asked to. So, just a minute. Sorry. जहाँ मीट खोल रहा हूँ मैं, मीट ही नहीं खोल रही. ये उधर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा.
So juries, if you have any questions, you can ask to the team. Can we quickly move towards demo if you're ready? Okay. Ready? Okay, perfect. अब मैं एक्सप्लेन करूंगा हमारा प्रोजेक्ट जो सिंपल प्रोटोटाइप है हमारा सास प्रोडक्ट का है और 2 entities are involved which are FPO and a buyer. In version 1 we are only keep FPO as onboarding farmer. It will onboard farmer, not farmer directly access our portal. FPOs are the farmer producer organizations that government handles or much private companies also handle it. Okay. Okay, I have already created 2 registers. I have already created 2 registrations for FPO and buyer. Let me log in. बोल दिया Let you us please check start with once? registration for farmer FPO. Okay, okay. Okay, here is the FPO page. We can add farmers here. Explain. So basically he's putting out the details like phone number, years of experience and plot size of the farmer that he basically grows. This gives us an estimate of how much can he grow the crop. Okay, I have created a farmer account and I list its product. It's we have basically made a model for only grapes, training it's grade 1 or grade 2 or grade 3. Let us list the details. सर को सुन लो वो जो बोल रहा है हाँ. Okay. The estimated quantity before harvesting. Okay, I will put up an image. It will detect the quality of using CV. It is analyzing. Okay, I will fetch IoT sensor data from that. Okay. सर एक्चुअली Okay. Can we visualize in the front the way sir is saying? या सो जिस हिंदी में बता सकते हाँ. हैं वो डब्बा क्या करता है सर वो क्वालिटी चेक करता है बेसिकली वो IoT सेंसर IoT सेंसर से फोटो खींचनी है नहीं फोटो CV में अलग मतलब हाँ फोटो अपलोड कर दी और वो डब्बा सिर्फ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स जैसे मीथेन रिलीज करते हैं, अल्कोहल गैसेस कुछ रिलीज करते हैं, फूड्स इथेन प्रोपेन भी रिलीज करते हैं, उसमें सैंपल रखना पड़ता है जो सैंपल है फूड का। ये प्रोटोटाइप मॉडल है, इसमें 12 to 13 मिनट्स रखना पड़ता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेंसर्स है उसमें 1 to 2 मिनट्स में हो जाता है। क्वालिटी समझ में आ जाती है, मतलब इन्वायरमेंटल वैल्यूज से जैसे अपन CV से सिर्फ साइज और ये मेजर कर सकते हैं कलर, तो इससे हम पूरा मेजर मतलब इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़ उसकी मेंशन कर सकते हैं। यस हाँ, सॉफ्टवेयर हमें सिर्फ फूड्स को एग्रीगेट वगैरह कर रहा है और CV मतलब उसकी साइज़ कलर उससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हाँ, फोटो से आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब ये तो अपन इससे सेंसर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैमरा मॉडल से, लेकिन फोटो से अच्छे से अपन I would आइडेंटिफाई कर request सकते audience to please keep quiet. ओके हाँ नहीं बताइए ना हैं। हाँ, तो IoT सेंसर से आपने स्पेक वो निकाल लिया एनवायरमेंटल Yes. ऑफ द आइटम Yes. और इससे फोटो से आपने निकाल ली क्वालिटी, हाँ। इसके बाद क्या करते हैं आप इसके बाद से वी डिसाइडेड टू कीप 50-50 एट बट 50% हम इसका यूज़ कर रहे हैं CV का, जैसे उसकी क्वालिटीज़ मेजर करने के लिए, तो और क्वालिटी का फिर 50% करते हैं कि आगे क्या करते हैं सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। हाँ, तो क्वालिटी ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का समझ है, गए। उसके हिसाब से उसकी प्राइस डिफरेंशिएट होगी। समझ गया
समझ गए, ग्रेड समझ में आ गया। इसके आगे उसके बाद में वो ग्रेड के हिसाब से उसके रेट डिसाइड हो गए, तो फार्मर को ग्रेड प्राइस मिलेगा, मतलब ऐसे कम नहीं मिलेगा। Q&A के टाइम गॉट इट। फिर कर दो अभी तो कनेक्ट, प्लेटफॉर्म क्या करेगा? क्या प्रॉब्लम हो जाती है? प्लेटफॉर्म एग्रीगेशन करिए ग्रेड्स के हिसाब से, ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड ए के सब एग्रीगेट हो गए, बायर को सब लिस्ट दिखेगी ग्रेड ए के। कितने फार्मर हैं टोटल? हाँ, मतलब ग्रेड ए के सप्लाई कर रहे और उसके बाद आपका भी हैं, इनके बायर बाय कर सकते हैं एग्रीगेटेड, और ट्रांसपेरेंसी भी है हमारे प्लेटफॉर्म पे। एज नाउ सिर्फ ग्रेप्स के लिए हमने ये ग्रेप्स के लिए ही बनाया है, और हम इसमें और फ्रूट्स वगैरह इम्प्लीमेंट अलग चीजें डाल सकते हैं। यस, लास्ट क्वेश्चन लाइक टमाटोज वी Okay. कैन यूज पीएच लेवल सेंसर्स। ओके, इसमें कॉस्ट स्ट्रक्चर और सब आपने डिफाइन कर लिया? यस, अभी इसका प्रोटोटाइप का कॉस्ट अराउंड 1500 आया, और इंडस्ट्रियल सेंसर्स अगर यूज़ करेंगे तो 15,000 कॉस्ट आएगा अप्रॉक्सीमेटली। यस, और ये कहाँ पे पड़ा रहेगा? आपके यहाँ पे या एफपीओ के यहाँ पे? एफपीओ पे रहेगा है, FPO जाके फार्मर्स अपना क्वांटिटी डाल के चेक कर सकते हैं। और अनदर थिंग प्राइसिंग का, क्योंकि प्राइसिंग अगर फार्मर के हाथ में दे दी इट कैन बी लाइक डेंजरस, तो इसलिए एफपीओ के पास सब डेटा रहता है, कितना प्राइस पे कितना बेचा, तो वो एक डिसाइड करेगा एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट फॉर द क्रॉप, तो उसके बीच में, और वो भी बताएगा कि सपोज आपने इसके लिए कितने लोगों से बात की है? सर हमने एक्चुअली 6 फार्मर्स, 2-3 जो सेलर्स भी है जो बाय करते हैं उनसे की, और अभी तक 3 एफपीओ से कॉन्टैक्ट सेट किया है। सेट मतलब वी हैव टॉक टू देम व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द इश्यूज। हाँ, सो आवर रेक्टर इज आल्सो अ फार्मर, सो वी आस्क्ड अबाउट हिम एंड ही टोल्ड अस द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट he faces and how are we solving it. तो इसको मास मार्केट कैसे लेके जाओगे? फार्मर तो बहुत है, इंडिया पूरा भरा पड़ा है, तो आप इसको कैसे उतारोगे मार्केट के अंदर? अगर Sir, आपको now इतने let's सारे- assume we take a singular region, नासिक। हाँ, नासिक में ग्रेप्स उगते हैं, तो अभी नासिक में देर आर अराउंड 50-60 एफपीओज इन नासिक डिस्ट्रिक्ट अलोन, तो हम उनमें से कुछ को एज ऑफ नाउ मतलब इनिशिएट। माइक्रो में आप चालू करोगे धीमे? हाँ, वन ऑफ द इश्यूज इन दिस इज एक तो ट्रस्ट, फार्मर्स का ट्रस्ट, एंड ऊपर से स्केलेबिलिटी, एज ही सेड स्केलेबिलिटी को बहुत कैपिटल लगेगा। एक तो वर्ड ऑफ माउथ, और ऊपर से जाके हर जगह अवेयरनेस फैलाना, एटलीस्ट एफपीओज को कांटेक्ट करना, बिकॉज कितना भी एफपीओज करे वी हैव टू गो एंड वी हैव टू पब्लिसाइज अबाउट इट, सो दैट इज अ वेरी। आपने रेवेन्यू मॉडल अभी सिर्फ दिखाया परसेंटेजेस में, आपने एक्चुअली यूनिट इकोनॉमिक्स लिया नहीं है कि आपको एक फार्मर के यहाँ लॉन्च करने में कितना टाइम लगता है, कितना कॉस्ट लगता है, क्या क्या लगता है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो think that's the परसेंटेज में तो सब कुछ अच्छा दिखता है, 8% प्रॉफिट, 10%, बट वो 8% कैन बी ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8% कैन बी ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। सो वो हाँ 25% भी इंडिया का कवर कर लिया, 25% में 10% भी कवर कर लिया, बहुत मतलब इट नीड्स फंडिंग टू Yes. गो फॉर दैट। वो आपने Yes. कवर नहीं किया कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कैसे आती है कि आप एक फार्मर को थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट मेनली us कि क्या accuracy level आ रही है, what they promise, what you get should also be factored while rolling it out to get your own assurance. We had one point कि जो accuracy हमारे ML model, जो accuracy whatever wherever it requires accuracy like OpenCV or our model IoT sensors, अगर हमें इंडस्ट्री का एक भी मिल गया तो अपने आप हम उससे एक अंदाज लगा सकते हैं कितना एक्यूरेसी है। एंड एज फॉर OpenCV हमारा फ्यूचर स्कोप है कि हम उसे ट्रेन करें, ज़्यादा डेटा सेट दे, ताकि उसका एक्यूरेसी थोड़ा नहीं लाइक बढ़े। अभी हमने ये भी एक मॉडल यूज़ किया था जिसमें कि जितने भी ग्रेप्स है जो भी मतलब फ्रूट बैट वगैरह सारी डिटेक्ट करते हैं हर एक क्रॉप के लिए, उससे ये लोग भी हमने मॉडल क्रिएट किया था जो कि पूरा एश्योरिटी देता है। उसको कंटिन्यू रखिए, ट्राइंग ऑन इट। I think that's the time for this team. Please give a big round of applause to team Explorers. All the very best. Next team is Hello. Hello everyone. So imagine you run a business in India and suddenly you start getting inquiry for your product from abroad. Now you feel that it is a growth in your business, but until one question strikes your mind, how should I export? What compliances I need to follow to export my product? This is, and the most scary part is one wrong document will like destroy entire your shipment. So now let me introduce you Rahul. So meet Rahul. So Rahul runs a cosmetic business here in India, and he has a good product.
he has a genuinely good demand for his product abroad, but every international inquiry makes him more confused about what documents should he apply, what compliance should he apply, whom should he consult to. It is very confusing for him. And Rahul is not alone. Thousands of Indian businesses who are capable of exporting, who have genuine demand for their business, are stuck in India because they don't know the roadmap where they should go. And back please. Where they should go because of the complexity of the export today in India. Now I'll get you through a case study which happened last year in 2025. So a mango shipment, 15 mango shipment of India were rejected by US because of one documentation error. This happened last year, and the mangoes were packed, shipped, treated, and when they reached US, they were rejected just because one document was missing, and business owners lost around rupees 4.3 crores because of compliance error. Now, we as Export Mitra does not want Indian business to lose money just because of compliance error, and hence we are introducing Export Mitra. So how we are going to do this? We are going to do this through our diverse team. Hi everyone, I am Sairam Bayati. I am pursuing chartered accountancy. I am a CA finance student, and I currently work at Suzlon Energy Limited as a CA intern. With my team, Nikunj, Atharv, Mukund and Krishna, they are currently pursuing engineering. So with the diversity of my team, we combined the domain expertise and tech expertise and built Export Mitra. Now I'll take you through the story behind Export Mitra, why we built Export Mitra, why we thought of building Export Mitra. So Export Mitra was born because we saw today exporters are very like stuck in India. Businesses in India are stuck because they don't know what compliances they should follow, whom to meet, whom to consult, what documentation, and n number of things. So today, as Export Mitra, our target is that today Indian businesses does not say I want to export, they say my shipment is ready. Now I'll walk you through the struggle of Indian export. So as I said earlier that there are multiple compliances, logistics, even logistics is a big जो उनको रोकता है. Logistics also is a blocker for them. We will also walk you through for it further. Now the realization is, our realization was that today India have products which have global demand, but we are not able to export it. So this is because Indian business need one partner who will guide them through entire export journey. Today Indian businesses need to go through multiple consultants, multiple document preparation. They don't have one single platform. We are building that. We as Export Mitra partners with businesses to help them at least start their business. Next slide. So I'll walk you through the current export market in India. So when we were researching about this business, we were like surprised reading those stats. So today India has 7.16 crore plus registered MSMEs, out of which 1.7 lakh MSMEs only export, which forms around 0.24% of total registered MSMEs. Now this is not surprising. The fact which surprised us is this 0.24 registered MSME bring around 45% of total India's export. So this was like insane. So now what we are targeting, that today India is targeting around in 2030 India is targeting to achieve 7.5 trillion economy, making India third largest economy. And to achieve this, one and only very important thing is to India to build export, to India to make more exporters, to India to launch its global market presence more and more. And I'll take you through numbers. To achieve that thing, today India has to grow 11 to 12% each year to achieve that economy by 2030. So now I'll bring you through our platform, what we are building, what we are trying to solve. This
everything I'll explain further, you will get more clarity through our demo, but I'll just walk you through what we are building. So we are building a one platform for entire export journey. So today, when a business owner has to just enter his details, our tool will generate him a total compliance checklist. We are not as Export Mitra, we are not one who will just provide you information. We are one who believes in doing things. We are one who believes in creating a value for the business. So we will get the document done, we will help you penetrate through the market, and also we will help you to create help in logistics also. Next please. Now the checklist which I talked earlier is now there are as we talk there are multiple compliances. Now it is not कि हम अगर इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इंडियन कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे. अगर मैं यूएस में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ यूएस के भी कंप्लायंसेस होंगे जो फॉलो करने होंगे. तो हम आपको उस चीज में भी हेल्प करेंगे. लाइक इन इंडियन कंप्लायंसेस वी हैव आईसी, जीएसटी, डीजीएफटी, सॉफ्टेक्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स. वी विल हेल्प यू थ्रू दैट एंड इन यूएस कंप्लायंसेस आल्सो. नाउ वन थिंग which we built to retain our customer is ongoing compliances. Now export is not such thing कि भाई मैंने एक बार कर लिया तो अब हो गया मेरा काम, अब मैं एक्सपोर्ट चालू कर सकता हूँ. एंड टू एंड जब तक आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आपको कंप्लायंसेस करते रहने पड़ेंगे. तो हम आपको जो ऑनगोइंग कंप्लायंसेस है उसमें भी हेल्प करेंगे. एंड one interesting Last thing 2 minutes for presentation. yeah and one interesting thing which we are introducing is the export benefit thing. जहाँ पे गवर्नमेंट, जैसे हमने बात की, गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहती है तो हम आपको गवर्नमेंट के जेब से पैसा निकालना आसान नहीं है. तो आपको 100% कंप्लायंट होना पड़ेगा उस चीज के लिए. तो हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. सो अब हमारा टेक कहाँ आता है. तो एज वी टॉक्ड अर्लियर कि हम आपको मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं. तो हम आपको आपका टारगेट कंट्री बताएंगे, सीजनल डिमांड्स उस कंट्री में, फेस्टिवल जैसे यूएई में या ईस्टर्न कंट्रीज में ईद के टाइम कॉस्मेटिक्स का डिमांड आता है तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. अब जो लॉजिस्टिक्स है, हियर दिस इज थिंग विच इज द बिगेस्ट हेडेक ऑफ कस्टमर्स, विच इज द बिगेस्ट हेडेक ऑफ बिजनेस. हम आपको उस चीज में भी हेल्प करेंगे. हम आपको सीएचएस से कनेक्ट करवाएंगे जो आपका कस्टम में क्लियरेंस करवा देगा. नेक्स्ट स्लाइड. अब वी आर हैप्पी टू शेयर. अब हम एज एक्सपोर्ट मित्रा वी आर नॉट समवन जो गेस वर्क पे काम करे. हमने मार्केट रिसर्च किया है, हमने लोगों से बात की है, हमने उनसे इनपुट्स ले लेके बिजनेस किया है. एंड द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग लीड वी हैव गॉट फ्रॉम अ कस्टमर नेम ग्लो जेनेसिस, जिसने हमसे कमिटमेंट ली है कि अगर हम 1 जून तक उनको कंप्लायंसेस करके दे, उनका एक्सपोर्ट रेडी करके दे, दे आर रेडी टू पे अस 25,000 रुपीज. अगर हम उनको 1 जून तक ये सब करके दे तो दिस इज द मेल अटैच्ड. नेक्स्ट प्लीज. हमने सिर्फ ग्लोजेनेसिस से बात नहीं की, हमने मल्टीपल लोगों से बात की, मल्टीपल स्टेजेस पे बात की है. जैसे माहेश्वरी इंडस्ट्रीज 1980s से वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हमारा थॉट प्रोसेस उनसे बात करना था कि उनसे जाने कि आज जो इतना बड़ा जायंट है क्या उससे भी कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ती है. और हमें उनसे बहुत कुछ इंसाइट्स मिला और हमें पता चला कि एक्सपोर्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आज उनको भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है. एंड बाकी लोगों से भी हमने बात की, उनसे हमने इनपुट्स लिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब मेन चीज हम पैसा कैसे कमाएंगे, हाउ एक्सपोर्ट मित्रा विल अर्न. सो हमारा प्लान है कि अभी आपको एटलीस्ट एक्सपोर्ट रेडी बनाने के लिए हम 1 टाइम चार्ज करें डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी. आपका बिजनेस कैसा है, 10 to 25,000 रुपीज हम चार्ज करेंगे. फिर आप एक बार एक्सपोर्ट चालू हो जाए तो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपका ऑनगोइंग कंप्लायंसेस हम लेंगे. हम आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए आपसे पैसा लेंगे. और अगर हम आपको प्रीमियम सर्विसेज भी देंगे, जैसे अगर आपको डेडिकेटेड एक्सपोर्ट मैनेजर्स चाहिए, कुछ पर्सनलाइज कंसल्टेंसी चाहिए, हम उसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे. नाउ हाउ वी विल रीच आवर फर्स्ट 10 कस्टमर्स. ठीक है. तो अब हम वी आर प्लानिंग कि हम एक्सपोर्ट एक्सपोज को अटेंड करें, ट्रेड फेयर्स अटेंड करें, हम सोशल मीडिया यूज करें, हम हमारा कनेक्शन यूज करें एंड हमको कस्टमर्स आएंगे थ्रू कस्टमर रेफरल्स. अब हमारा 90 डेज प्लान है, हम अभी मंथ 1 में है. हमारा प्लान है कि हम एक बार हमारा कंप्लीट एमवीपी बना ले, फर्स्ट कस्टमर ऑन बोर्ड ले ले. सेकंड मंथ में हमारा प्लान है कि हम फर्स्ट कस्टमर को एक्सपोर्ट करवा दे, रेवेन्यू जनरेट कर ले. एंड थर्ड मंथ में हमारा प्लान है कि हम लॉजिस्टिक पार्टनर एंड कंप्लायंस पार्टनर को ऑन बोर्ड ले ले. अब द फ्यूचर ऑफ एक्सपोर्ट स्टार्ट्स हियर. अब हमारा फ्यूचर आ चुका है. इंडियाज फ्यूचर इज एक्सपोर्ट. इंडिया वांट्स टू एक्सपोर्ट. जस्ट थिंग इज दे आर लैकिंग behind in compliance partners. We will help you through that. Now we will move on to demo. Yes. Can we please move towards the demo? Last 2 minutes. So I will walk you through the demo. So demo में
we will firstly onboard the customer. The customer will go into profile and fill in the basic business details कि वो इंडिया में क्या कर रहा है, बाहर एक्सपोर्ट क्या करना चाहता है, और उसके इन्वेंट्री में से वो क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता है. Then after completing the profile, the user will get a personalized compliance checklist generated. उसमें he will get the list of documents he need to export to that particular country from India, and there could be few cases that he could have that documents, or in case he does not have that documents, वो फिर हमारे साथ जो firms and consultants tie up किए रहेंगे उनको रिक्वेस्ट कर सकता है to fetch that document for him. And to get the recurring documents, we have added the functionality to fetch it from DigiLocker. And as said in PPT, we will handle all the compliances related to the destination country, as well as the compliances to get the benefit schemes from government, and the recurring compliances like GST returns and all. Also, coming to next section will be document section. Document sections will have all the documents that will be generated from the firm or the consultant. वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और कोई भी इंटरमीडिएटरी डॉक्यूमेंट्स अगर उस स्टेप के बीच में रिक्वायर्ड होंगे उसकी भी रिक्वेस्ट यूजर्स को यहाँ पर आ जाएगी. Another feature is the generation of recurring documents, like export करते time we need custom clearing, in which we need documents like packing list and all, and country of origin certificate. So user की प्रोफाइल से we will fetch details, बस उसको fill करना है कि उसको कहाँ पे भेजना है, किसको भेजना है और कौन सा प्रोडक्ट भेजना है. So it will basically generate you the list of documents, and अगर आप उसमें कुछ error कर रहे हो तो वो भी इसमें detect हो जाएगा, and वो भी उसके बारे में आपको एक warning दे देगा that you need to fix this. And next would be the logistics part. Logistics part में जैसा बोला था कि user के लिए बहुत hectic हो जाता है to find out the right way to ship his products. So we would help him to just fetch the best shipping route. Like अगर उसे जालना से रशिया, उसका समझो अभी जैसे हमने पार्टनर किया था ग्लो जेनेसिस के साथ, तो उसका प्रोडक्ट है बॉडी लोशन, उसको वहाँ पे भेजना है, तो उसके लिए कौन से पॉसिबल रूट से कितना टाइम लग रहा है, he would get the idea of that, and we would give the functionality to assign the CHA or the clearinghouse agent that we have on that port to handle the customs of the port. Another section would be the BI tools, in which the user will get the insights of the countries that he should consider to export in next. We would be moving towards the Q&A session. Okay, and yes, and there is also an update section in which the user will get the day-to-day government regulated compliance updates regarding suppose GST rates में कुछ change हो गए, या फिर वो जो export कर रहा है उस product के बारे में किसी country में कुछ laws में change हो गए, then we would alert the user regarding that too. Yeah. Juries can ask the questions now. Thank you so much for the presentation. Big round of applause. The first is a comment, not less a question. Like you said, you use AI for reading all the compliance in real time and then advise the customer, right? So, see, AI by nature is probabilistic. Every time you run, it can possibly generate a slightly different report, and in a compliance case, it can mean problem. So what can be done without AI? You should not unnecessarily try using AI, because it is possible that you can do that job maybe a lot without AI also. So one is that, because in compliance, if you make a mistake, if that guy gets hit, then he will come back on you, right? So don't use AI blindly just for the sake of using AI. Second, it will be costly if you use it, right? The second part is that you said that 25,000 he was willing to pay one time. Did you check that whether there's a recurring money he's willing to pay, or you spoke to, like this does solve
a problem, let's say there is a task which an exporter has to do and it automates it. But are they willing to pay a recurring cost, like in a country like India, no, even for Tally, if you know Tally is an accounting software, how much customers are willing to pay for it, annually? So for a compliance, maybe it would be good to know that what kind of money Indian exporters are willing to pay on recurring basis. Do you have any data on that? Whether they told you something beyond that 25,000 one time? सर अगर रेकरिंग रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपोर्ट में से तो हमारे पैसे बनने ही हैं, और उसके अलावा कस्टम्स जो पार्ट होता है, बायर बोला क्या वो देगा? हाँ सर, अगर हम कस्टम क्या अगर बोला? सीएचए के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो बायर को शिपमेंट तो लोड कराना ही है। मतलब जो सेलर है जो इंडिया में है, जिसकी हम बात कर रहे हैं ग्लो जेनेसिस, वो जब शिपमेंट लोड कराएगा तो उसको कस्टम्स लगेंगे, और हम इसमें कस्टम्स भी इंटीग्रेट करने वाले हैं, उससे हमारा रिकरिंग रेवेन्यू आएगा। कस्टम में क्या इंटीग्रेट करेंगे? सर हम सीएचए के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं ना, तो उस बेसिस पे हम चार्ज करेंगे। क्या वैल्यू एड क्या मिलेगा सीएचए से इंटीग्रेट करने से उसको? सर बिना कस्टम हाउस एजेंट के वो मतलब कस्टम्स के थ्रू उसे जाने मिलेगा ही नहीं। Correct है, but see, will the CHA means I don't know the technicality, but it is like, will the custom department allow you data? हाँ सर, जो CHA होता है ना, उसके पास इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन कस्टम होता है उसको लाइसेंस मिला होता है, और CHA के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता है। So I'll add on to this. ये जो क्लियरिंग एंड हैंडलिंग एजेंट है, दे डू ऑल द सर्विसेज एट द पोर्ट। हाँ, अब उसमें दे हैव ए चार्ज, so they say कि when they coordinate and they will have some share from them also, कि किसको लेना, किसको select करना, they will try to help or So guide. CHA will pay them. CHA will share, something like that. They will so get some money from them. But his point, I think you need to think there are two models of revenue collection. One is one time, another is subscription like. So a person, if he joins you and avails, there has to be some model, a small amount, but it has to be recurring because he is a member. He cannot come once and go off. Something like that could be thought of. But one or two questions from my side. I hear from most of the teams the word earning. I am confused. When you say earning, I understand revenue because all are showing revenue. Earning in true sense is what we are emphasizing is the net, what you save, that is called profit. So I don't know in your terminology, earning means profit or earning means sales revenue or revenue. So you need to always see revenue is one, cost is another, and earning जो मतलब होता है वो क्या बचा आपका, cost loss है, profit है, क्या है, वो एक चीज़ तो for all the teams one has to see what is earning and what is net profit or net loss. There is a different method to arrive at. आपकी टीम में एक CA है ना? हाँ. So you can understand better. Right. So sir, मैं उस पे आंसर करना चाहूँगा. Don't give me the answer because we have less time. Okay. These are the questions you better. If you are aware, good. Yeah. Second, all the teams are showing 1 month, 2 month, 3 month. I don't know what background you got it and what input you got. There is no project in the country or any team. He can do all the things from initial to this. 3 months में सब कुछ कर ले. It is not possible for you to do that. Yes, sir. So short term is not 3 months and you say कि मैं ये करके, there are so many things which you need to do. And another point which I highlight, that data and resource cost. In this project, your resource cost is important because you people cannot think of. You need to have an expert in your team who is aware of compliance, who is aware of what are the things, because general people cannot rely on AI and say कि उसने ये बोल दिया मैंने customer को बोल दिया, ऐसा नहीं होता. Because right, and so this allows you to think कि वो resource करूँगा तो कितनी cost आती है, और that is what the setup cost and recurring cost and कितनी set, और बाकी तो जो resource है आपके, आपने बोला AI कर लेंगे, तो आगे the previous point previous team में बताया आपका कौन सा सोर्स से लोगे, उसकी क्या सब्सक्रिप्शन फीस है, क्या आपका हार्डवेयर चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सब चीज़ें वो सेटअप कॉस्ट में आती है.
whether it is capital expenditure or this, और हर एक इन सब चीज़ों में ब्रेक इवन पॉइंट लंबा होता है. It is not 3 महीने 1 साल का नहीं होता है. Anybody says कि 1 साल में मैं प्रॉफिट करा लूँगा, your own assumptions are wrong. Yes. So these are the few things which probably coming as different, but applicable to general, सभी के लिए. Thank you so much, sir. Thank you so much, Satish ji, for your insights. Thank you so much, Thank you, team, team, for a wonderful presentation. Now I would request next team, Control Alt F4. Thank you. Just keep the mic closer to your. Next team, I would like to call Kirmada Coders in green room. You can start your presentation now. Jai Shri Krishna everyone. So before I start with my presentation, let me sorry, bear with my sore throat. Let me first take you through an actual story. So मेरे दादी जी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन था and she had to do the operation for both the eyes, and we went ahead with the first one. Then like all families have, we had a Mediclaim policy too. So we went ahead and filed a claim, but the insurance got rejected and the operation costs 2.5 lakhs rupees. So basically there was a section 4.3b which says that we would cover only one cataract operation in a year. How do we know that? So this really made me think that what's right and what's wrong, and I just went ahead and discussed this with my teammate Rutuja. And then as we were going on with the research research for the insurance policies, we learned about how they actually work and how people actually claim them. And the first thing that we noticed was that they are really difficult for normal people to actually understand. There are 40 to 60 pages of long documents with many legal words and co-pay limitations, room rent conditions and whatnot. The list goes on. So our first step was to address that specific layer. And initially, we decided on building a system where you will upload your insurance policy and our system will make a proper analysis of it and give the analysis and the summary to you in a layman language. And not just that, it would also provide you with the insights like your risk score and your total financial exposure that you will have. And I thought that this would actually solve the problem. But then when we started looking at it from a business point of view and talked to more people, we talked to around 9 to 10 people, everyone was like, हम आपका product तो use करेंगे, पर हमको इसमें कोई बोलता है comparer चाहिए, कोई बोलता है recommender चाहिए. So only a decoder was not satisfactory for everyone. Then we had a talk with one of the personas, Kamal Maheshwari uncle. So what he told was, मेरे को अगर मेरा claim reject हुआ and you help me fight it, then only I'll pay for it. And that thing really stuck with us because we were diving into recommendation systems, comparison and everything. But revenue kahan se milega? Because Indian consumers don't pay for these services very easily. So we took a deep dive into the dispute resolution under insurance policies. And that shifted our vision from a normal insurance decoder to a tool which is a companion for you along your dispute resolution journey. It also helps us get a clear insight on who our target customers are, which shifted from 20 plus to actually 30 to 55 aged users. We got a clear goal, which is to narrow down our revenue model to dispute resolution, and the hooks, we kept it as the decoder, comparer and the recommender. Now let us walk through how it actually works from a user perspective. When you come to our website, there will be an option called Fight Claim Rejection.
if your claim gets rejected, you can go here, and then it says that you have to explain your case in a very normal language and also upload your policy as well as the rejection letter. And when you do that, it will generate, okay, and when you do that, it will ask for some more questions, like some more legal questions, but if you don't have the knowledge to it, you can actually just put proceed. And then here it gives you your case strength. Now the case strength means that the more the number is, the more you are likely to actually fight it in the court or actually get the claim back to you. And then we will generate a roadmap that you have to follow. Now we came through this roadmap through research, and also we talked to the legal people. And the first step would not be to actually go to the court, but to it would be to comply to your insurance company that हमारा claim reject क्यों हुआ, that would be the first thing you would complain, right? So what this path does, it will give you a email curated to your case. So it will be a personalized email. You just have to download it and just have to put your information and you can send the claim. Suppose the Gmail that came as a response is not good enough, then what? We have a chatbot support at every step of our roadmap to guide the user when they are stuck. So suppose I can say कि my claim, the Gmail they sent as response is not helping me. So the chatbot will guide you to either email once again or go to the next step. Here's the next step. Now the next step would lead you to the IRDAI portal where you have to file the complaint. And if that does not work, then it will lead you to the ombudsman petition. And lastly, it leads you to the legal notice, because सबका first instinct तो ये नहीं होता है कि direct court में case करना है. So all of these PDFs are drafted according to the legal standards that are in the market, and it helps step by step. Suppose your problem is solved at this step, you can just click here and yes. So this is our main revenue model. And now to build the confidence among the user, we also have provided them with the IRDAI guideline backing. It will mention that तुम्हारा कौन सा case में कौन सा point will be backed by the guidelines, and we also have some precedent cases for them. 2 minutes for presentation. Okay. And we have also taken some customer inputs and put this, that अगर आपको court में fight करना है, you just know the laws, but खुद को और defend करने के लिए, if you have already fought cases that were similar to yours and you can give that as backing, then we added this feature as well. So this is the dispute resolution part of it. We, as many of the users requested for analysis, comparison, recommendation, we did the best. We tried to include all of them. So this is the analysis. And now the analysis, it is not 100% LLM based, but it is 100% backed by the actuarial and the financial formula. So when you just have to upload your policy schedule, and uploading the policy wording document is optional. So if you upload both of them, the accuracy is 95%, and if you upload just the wording document, the accuracy is 93%. And here it will give you the risk score, the expected out-of-pocket money, the copay risk, and everything that you should actually keep in mind. So why clause wise? Everyone in the market is there to sell you policies, to market themselves, but no one is there to actually tell you कि reality क्या है.
और अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो हेल्प कौन कब कैसे करेगा? वी हैव ऑल द टूल्स इन द मार्केट, बट लोगों को पता ही नहीं है, और अगर है भी तो कौन से स्टेज पे क्या यूज करना है, कब यूज करना है, वो हमने क्यूरेट किया. Now the insurance market in India is rising exponentially. The 2024-25 IRDAI report suggests that the premiums have crossed across rupees 11 lakh crore, and उसमें से भी the amount were 26k crore के claims reject हो गए हैं लोगों के, and 11% claims are denied. So we have a very big target market. And if we try to zoom out a bit, the total policy holders all over the globe are over 560 crore. And if we focus majorly on India, then they are 2.6 CR. But then there is this narrow segment जिनके claims actually reject हो जाते हैं, and then there we come in as a companion for them. And that segment of users is the number 35 lakh. So now how do we actually deploy this in the market? So we roll out in 3 phases. First is the alpha testing. Using personal connections, we would reach out to hospitals or car dealers जहाँ पे actually लोगों को insurance companies insurance के बारे में information मिलती है. So from there we can actually reach out and ask them to test, validate us, or give more suggestions. There we can improve. Second is the beta testing phase, where we go to the online complaint platforms like Reddit, X, Facebook, and वहाँ पे हम लोगों के DMs में slide करके बोल सकते हैं कि आपको ये problem है, try our product and tell us how helpful it is. Last 2 minutes for the demo. And lastly, we will slowly roll out to the paid version, which is our anchor is 499 for the AI-based analysis, and if human support is required along with it, it's 999. So initially, we will give discounts and get this product at 149 rupees and 499 respectively, and as and when customers come in, we will try more pricing validation experiments to get more profits. The competition analysis. So in the insurance policy market, there were these gaps that we have listed in the column, and no one caters to them. So clause-wise does it for you. And now for the 90-day plan, the first 30 days will majorly focus on actually validating our prototype. So we will go to the hospitals and talk to the real users who will actually need it, and we will use it to test our prototype, how well it works. And second main thing on our first 30-day agenda would be to acquire a legal co-founder in our team, because that is something very necessary for us to move forward with the legal tech startup. The next 30 days plan would be to see if the users actually pay. As she mentioned, in the beta testing phase, we would go on platforms like Reddit, X, and slide into DMs and ask them to use our product for a very discounted price. Because if the claim rejection price is very high, then वो 150 देने में 149 देने में ज़्यादा सोचेंगे नहीं. They just want their claim to be for them. And then the next 30 days would, in जो last 2 phases में learnings है हमारी, we will try to implement them more, and also we will try to go for the B2B market, and later on deployment of our product in the actual market. Can we please move towards the Q&A session? Yeah, just a minute. And the last slide, who are we? We too are just the second-year techies, and one persona that told us about the insurance policies that sparked our interest, and now we are here in this field. And we are really looking for a legal co-founder for us. So the market is open, and any one of you can actually contact us. I am Rutuja Dhavar. And I am Khushi Birla. Thank you. First of all, I would like to really applaud the first all-female team. It's really exciting to see this. Thank you so much, sir. I was getting a lot of questions, and your next slide was answering it. So honestly, I don't have many. So kudos to you. We talked to a lot of users जिनके same questions आते थे, so we try to incorporate most of them. No, a very interesting use case, right? And maybe a genuine problem.
And the most impressive thing is the way you pivoted based on Mr. Maheshwari. Did you say? Yeah, Kamal That Maheshwari. was a very interesting thing. But do you have any idea like that out of those 35 lakh or 11%, how many of them are actually wrongly rejected? Have you done that analysis like, Sir, can you repeat your question? Your voice is very low. you said that, there are 35 lakh cases that get rejected. But out of 35 lakh case, how many are wrongly rejected? Is there any way to find that, right? That out of 35 lakh, 10% are wrongly rejected, 5% are wrongly rejected. So that is your addressable market, right? Right. So you have any idea of that, how to validate that? We would definitely look into it. Wrongly rejected wala part didn't. So you are fighting the wrongly rejected cases, right? What is the right rejection? Yeah. Suppose you missed reading that cataract thing. You will not get that claim. Right. Right? Wrongly rejected is that, let's say they were not ready to pay even the first one, let's say. Right? Then there is a dispute. You just can't raise a dispute if you have misread the policy. Right. And you are basing your whole case on the dispute. So for this, Or that's your major use case, let me put it like that. Right. So how do you validate that market? I mean, do you know insiders in the insurance industry, maybe who can tell you that what really happens? Who might actually know to some extent. We are that- actually looking. Yeah, we are so- looking for a co-founder. We are looking for a legal co-founder. Your search for even finding those people who are rejected, right, is going to be a tight one. Yeah. Because you see all across the country, 35 lakhs, how many from, let's say, Pune, and which one is rejected? It's going to be difficult. So you have to figure that out before you find the founder. Okay, that's how we find, because if you're not going to be able to find your ingredient, then whether you get a founder or not, that's your biggest problem to solve is, I need to find my audience who's going to buy. So Correct. we had a rough plan for this. We were thinking that we would connect to the lawyers, and lawyers के साथ connect करने के बाद we would मतलब keep a track of the cases regarding insurance policy का dispute resolution. You're taking away the lawyer's business. You're able to understand he's going to charge money for the same thing, and they're not going to share. If they've reached the lawyer, then why will they use clause-wise? You're a replacement for the lawyer. If you can somehow, I don't know if you have somebody known in IRDA, or IRDA publishes that data, right? That how many cases get lodged with IRDA, and how many of them actually get accepted later on. Okay. So let's assume that out of 10, only 2 people fight. Then possible. Possible. But out of those 2, if one is getting accepted, then you have a significant addressable market, right? So you have to just find out. Because ultimately people will fight through IRDA, right? People, I'm just saying one way to find out. So there I may would be please more. request audience to But because maintain the silence. Or there may, I don't know if there are specialist lawyers who only fight this, I really don't know. But that's the weak link we see in the whole thing. Otherwise, you did a pretty good job. But this is a critical one, right? Yeah. We would definitely look into this market. one. So in order to put the same thing in a different way and to put the same thing in a little different and little more technical, probably they will agree with me or not, I don't know. But what is coming to me, there is a subject called data analysis. Right. So what Jimaji has said, you need to look into this particular set of datas. I think this is an important aspect of data analysis. Right. And some part of it in technical language, you must have heard the name of data engineering. Yes. So this is all aspect of data engineering, what to collect, how to relate, how to process the data to reach to identify the problem, and then to validate. I would please request audience to keep silence so that it would be So audible this for is a everyone. common aspect of data analysis. Probably it has not come, but it is important in every project. In your case, it becomes very easily understandable. He has explained it nicely. Yeah. What aspect of data you need to be more looking into to make it relevant for your analysis. But this type of data has to be captured, analyzed, and then validated for your problem identification and solution finding.
Yes. We really tried to validate our idea through real cases, but हमें कुछ ऐसे मिला ही नहीं कि हम जिस पे actually कर सकते। डाटा एनालिसिस, पहले डाटा कैप्चर करना, उसको एनालिसिस करने के लिए राइट सेट ऑफ डाटा होना, एंड देन उसको इंटरप्रेट करने के लिए मेथड होकर फिर आगे बढ़ना। We will. This is our new road map. अभी डाटा इंजीनियरिंग करके we will find out. Yeah. डाटा इंजीनियरिंग बोलो, डाटा एनालिसिस बोलो, whatever, I think all the Yes. IT experts, I'm not the IT person, but they can. One of the roles of an entrepreneur also is to find visibility where ambiguity exists, right? Right. So it is like that. I mean, if everything is visible, then many can open this shop, right? The same thing, Right. right? So you have to figure out, but it will be possible. That's all I can say. Yes. Yeah. Then maybe you have a definite case. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, judges. It's a request for audience to maintain the silence because as Ruchi said earlier, we Okay. कन्वर्सेशन होईल ना प्रॉपर यो माहिती थोडा नथिंग ग्रेट यार, वही क्रिप्टो सॉरी नथिंग ग्रेट यार, वही काम का टेंशन और सैलरी. सो आई एम थिंकिंग अबाउट सम साइड इनकम. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I think you should try crypto trading. क्रिप्टो ट्रेडिंग यार नहीं, मैंने ट्राई किया था पहले, तो आई हैव सम बैड एक्सपीरियंस एंड आई फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन दैट एंड ऑल्सो आई फेस हेवी लॉसेस, सो आई क्विट दैट. So कौन से problems थे, कुछ explain कर. Major problem is that in crypto trading we have to use multiple applications and for example like अगर मुझे BTC buy करना है या फिर BTC trade करना है तो first मैं news analysis करूँगा from multiple apps. मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ फॉर न्यूज़ एनालिसिस एंड देन फॉर ट्रेंड्स एंड चार्ट एनालिसिस में ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ. आफ्टर ऑल दिस चार्ट्स, ऑल दिस रिसर्च एंड all this research, after execution, for execution on main app, मैं वहाँ फिर भी गलती कर बैठता हूँ, तो इसलिए मुझे हेवी लॉसेस होते हैं और ड्यू टू माई जॉब डूइंग क्रिप्टो फॉर 2-3 hours per day is not possible. No worries bro, तेरे सारे problems के लिए एक one stop solution है ना, क्रिप्टो गुरु. So guys, Crypto Guru is our one-stop AI platform which lets you execute different actions in crypto trading. Like आप command देके multiple actions simulate कर सकते हो. So it also comes with multiple features. So the features include chart analysis, portfolio management. If आप beginner हो then you can also learn various strategies there. But if आपको कोई experience है then you can also simulate your strategies to check the your strategy if it is going right or wrong. So these are lot of features that Crypto Guru provides. अगर तू कह रहा है तो मैं क्रिप्टो गुरु ट्राई करता हूँ क्योंकि यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग भी होती है और मैं नए कंसेप्ट्स और आइडिया सीख सकता हूँ. बट व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? क्रिप्टो इज वेरी वोलेटाइल मार्केट. सो सिक्योरिटी की बिल्कुल टेंशन नहीं है बिकॉज क्रिप्टो गुरु डजंट डिमांड एनी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स. इट जस्ट टेक्स परमिशन टू व्यू ओनली एक्सेस ऑफ योर वॉलेट. वो खुद से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता है. एट लास्ट आपके पास एक कंफर्मेशन आएगा. सो एट द एंड यूजर ही सब हैंडल कर रहा है. नाइस यार, मुझे एक क्यूरियोसिटी है, क्रिप्टो गुरु के फाउंडर्स कौन है जिन्होंने इतने लूप होल्स, मेजर लूप होल्स आइडेंटिफाई किए हैं? So, we are the team Kirmada Coders, founders of the Crypto Guru. Myself, Ayush, and my team mates, Yash, Pritesh, and Pushkar. So, Crypto Guru is built not assuming the problems, but validate the problems. So we spoke the different peoples that are do crypto and that related tasks. So Durgesh Chandak sir,
So who was the CA and former trader. He gave the insights that compliance and the disclaimer are the more important for your platform. Second, that Bharat Ladi sir, who tell that direct means inaccuracy in your model is the direct loss, financial loss. So you can do the back testing and improve your accuracy of your model. One of the another is Vaibhav Heda, sir, who is a CA and option traders. He has his own strategy, but in the market no tools have this मतलब वो खुद की strategy मतलब implement कर सके. अभी strategy मतलब कौन सी वाली? अभी वैभव सर जो है उनको अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न पता है, उनको उसमें ट्रेड करना अच्छा लगता है. तो हमारे प्लेटफॉर्म में मतलब बोल सकते कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये कॉइन में आया है, BTC में आया है, तो मुझे नोटिफाई कर. सो ही सेव्स हिज टाइम एंड ही ऑल्सो सेज दैट इफ यू बिल्ड this feature in your app, he will the first customer of our Crypto Guru. And Rahul Chandak is a CFA. He mentioned about the switches between the 4 to 5 multiple trade platforms tools for the one trade. It led to the inefficiency and the overflow break and also time consuming. Amal Paloskar sir is a long-term crypto trader. He give missing alerts structure way to practice the strategy and notify when the BTC is this $72,000. So our system will notify him. So rather than talk to the people, we also survey the forms from the Discord and Telegram crypto community, and these are the results. Where we can see that 60 to 70% people lost their money due to the bad decision and the emotional trade, and others are frustrated. What you frustrate mode and the AI code analysis charts and which features do you see in our app. Next. So our monetization strategy is this. We are the two target customer are the crypto traders whose age between the 18 to 20, means they are working professional and having the less time for this to analyze the charts. So it helps them traders says that I have this strategy, I have to if BTC gone this invest my these rupees and he will notify the you. And also our platform is for the beginner traders. So I am new to the this and I don't know what is the crypto it is. So he will explain with the theory, with simulations and with the paper trading options, which is no one in the market up to till for the crypto. And our revenue model is that 1 month free premium for the new customer. So he will attract our model and use our model. And after that 15 prompts per day for the free. And two versions are there, Pro and the Pro Plus. In the Pro, where unlimited AI prompts is given, and it gives the sentiments also. And in the Pro Plus, we have our own strategies and chat analysis, and also tell us the well alerts. I hand over to the Pushkar. Please keep silent. हमको बोल रहे हैं कि बोल सबको बोला जाए. तेरे क्या कैसे? Last 2 minutes for presentation. Yes. So like. Now I would be moving forward with what is our next 90 days roadmap. So in the first 45 days, we are product centric in first 45 days. So what we are going to do is first is improving our model accuracy. So currently how our AI is giving signals is it is having 2 models. One is a mathematical model which works on the past candle data and all that upper trend line and things. Second is a geometrical model which finds the patterns, double bottom, head and shoulder, whatever it is, bullish or bearish, how it may be. So that is one of the thing. And for improving model accuracy, we have thought that we will be fine-tuning it using one of the financial transformer-based architecture. That will be one of the things. Second will be tying up with trading platforms. So we will not only paper trading, but we will even simulate the live trading. So and next is adding the options trading. So currently our platform only supports futures. So we are even planning to add the options.
Then is beta launch and testing. So first we will launch our app to limited users. We will let to know like what are the feedbacks there. Are there any improvements? Then we will even improve our model. Then comes is onboard the crypto research analysts and influencers. So there are main go-to-market strategy. So we are onboarding them, and there is a signal feed where we even track their wallet, and they even provide the signals on our platform, which we can even analyze with AI. Yes, next slide. So for the go-to-market strategy, so as we are onboarding crypto influencers, so they have some, so like first he will apply in my platform, all the KYC related and all the verification will be done. Then he will even connect his wallet to our platform, and so we will make sure that he isn't giving any fake advice. Like many of the crypto influencers, what they do, they only show profits, they don't show loss. So this is the way we are even tracking to him. He is giving legitimate advices. And as they are influencers, so if they have stake, they will automatically promote our platform too. Then is crypto communities. So there are a lot of crypto communities on Telegram and Discord. So we will partner up with them. We will introduce them our platform. We will show them what are our features. And then is educational content and marketing, which will be done through Meta, Instagram. We will upload the content. Then is the offline strategy. For offline strategy, there are many college clubs in finance related thing. So we will go host workshop. We can even host hackathons, financial hackathons based on crypto. So we can even get new ideas what we can add. Okay, so let's suppose in next 45 days we target to reach, like we interact with 50,000. Can we move to the demo? Okay, okay, fine. Demo. Can you please adjust your mic once? Okay. Okay, so like this is basically our home page. So like it tells like just launch the app. Okay, so this is the interface like ChatGPT. So if the user is new, he need to register. So currently I have logged in. What I will do is I will just connect my wallet. So what it will do is from my extension it will fetch the Trust wallet. So I will connect my Trust wallet currently. So like if you see my wallet is now connected, go on the portfolio. Okay, so it fetched my real wallet, like I have $6 in USDT and very minimal amount in BNB. So what I can say is like analyze like what are my holding. So currently I am only holding like stable coin, so it won't tell me much thing. But if I have larger volume and it is distributed, it will even say like you should sell this coin, or you should hold, or you should buy something else. Go to the wallet and contact. So in the wallet and contact, what happens in crypto, for example, I have to send USDT to Ayush. There is a big character which I have to always paste there and then enter his amount and then send to him. So what we have added, a conversational interface. So I have saved my address. I'll just command there like send 1 USDT to Pushkar. What will happen is it will automatically generate a transaction. I'll confirm. What now will happen is automatically it will redirect me to my Trust wallet. I'll do one confirmation and I'll instantly get through Brock. Password is trust123. Last 2 minutes for the demo. Okay, okay. Leave it, skip. So it would be a live thing. I will receive money. Another is watch list. We have even added a trading view widget. If you click on BTC, you will see the charts. If you want, you can even do technical analysis. Go on the chart analysis bar. So for example, if I don't know technical analysis, what should I do? I can even command my AI to analyze BTC. It will analyze the graph. He will plot the resistance. He will plot the trend line. What are building. He will even say me like what is the support, at what target you should close the thing. Go on news and sentiment. So crypto market depends on news and sentiment too much. So I can even, so these are the live news fetched from different platforms. I can even ask him like
I am buying BTC, is there any positive or negative news? So it will even say me what are these, and if I go on futures, so currently we have implemented futures as a paper trading, so I can give him voice command, or I can even say him to open position. It will open some of the position with leverage. Go on Trade Journal. So Trade Journal is a history of whatever I have done. I have swapped, I have sent. So it will even track my thing, like I'm trading on very high leverage. It will even give me advice what you should do, what you should not. Go on LearnHub. So on LearnHub we have different, so if you go on chart patterns, so there you will see there is a different type of patterns. So head and shoulder is there. Go on, go down. So this is just a short description, but if I enter simulation, I can even I will enter technical analysis, then I will select one point, and then I will even say like is it buy or sell signal. Then it will be even analyzed, like are you correct or not. All those things will be done. If I have any question, I can even ask to my AI tutor. Going on the back testing result, like go on back testing. Okay. So Time to Q&A. You can finish it. Okay, so 30 seconds only. Just generate signals. So whatever, so for 90 days past data, we have backtested our signals. So this is our accuracy, like 15% gain with 100 trades and 68% accuracy. And going on strategy builder, if I add new strategy, I can specify here, I trade on this only pattern, I prefer these coins, I prefer like this is my margin, and it will always. It's time to Q&A. I would ask jury to ask the questions. Yeah, one question. Which systems have you actually tested yourself? Because I'll tell you where I'm coming from. A lot of this is already there in a lot of systems. So you're replicating all of those systems in yours. Yes. You know, there's already a lot of analysis. There's already, okay, the strategy implementation or the strategy builder may not be there, but where's the value add? Why would somebody pay you money to do this thing? First question. Second, because I have seen my DBS, you know, we have an access in Singapore over a DBS system. I've seen that. I've seen CoinDCX. I've seen the wallets. And wallets giving this kind of stuff is possible. So where's the differentiator? Where is the reason why I would pivot towards this? सर जब हमने कस्टमर वैलिडेशन लिया था तो मेन प्रॉब्लम हमें 25 to 30 एज ग्रुप के बीच में मिला था. वहाँ पे मतलब उन जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ट्रेडिंग किया था, तो बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट और उनको उनके स्ट्रैटजीज आइडिया सब रेडी थे. बट हमारा ऐप क्या कर रहा है, सारे एप्लीकेशंस टूल्स एक ही ऐप में दे रहा है. वो तो सारे भी कर सकते हैं, मतलब मैं मेरे दूसरे एक्सचेंज में अगर क्लाउड का ये लगा दूँ तो वो भी कर सकता हूँ, पर मैं मेरे एप्लीकेशन में स्ट्रैटजी का एक पार्ट दे रहा हूँ ना. अगर मैं सारे AI एनालिसिस तो दे ही रहा हूँ, बट आई कैन इम्प्लीमेंट माई ओन स्ट्रैटजी देयर एंड आई कैन लर्न न्यू स्ट्रैटजी ऑल्सो. सो ये एक मेन की पॉइंट है ना, तो उनको ये पसंद आया था, तो हमने ये प्रोजेक्ट, तो उन्होंने ही बोला था आई विल बी योर फर्स्ट कस्टमर इफ़ यू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटजी वाला पॉइंट. अच्छा, थैंक्स टू दैट कस्टमर. बट सबसे पहले तो ये पूछे, हाउ डू यू बिल्ड द ट्रस्ट? You are putting your strategy, but what is the success rate? How you will deliver on your strategy? Because every strategy is not successful. There is plus and minuses. We have seen in shares, stocks, and valid for crypto also. So it requires a strategy and it requires a maturity. Nobody can say कि I become a day one strategist and my strategy will be good. बहुत है वैसे लोग, but उसके लिए ट्रस्ट होना, उसके लिए कॉन्फिडेंस आपको देना, और उसके बाद लोगों को आना, एंड देन यू नीड टू डिलीवर ऑन इट. एंड हाँ, रेवेन्यू मॉडल आपने लिया करा, और इसकी अगेन द सेम पॉइंट इट इज़ अप्लीकेबल अक्रॉस ऑल द प्रेजेंटेशन. रेवेन्यू मॉडल एंड द कॉस्ट मॉडल एंड द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स. In this case also, in the previous case also, we talked about the resource. But resource में किस caliber का resource चाहिए? You want expert who can make strategy. Nobody can make, no, AI cannot build a strategy for you. You have to think for you and for your customer, and nobody is perfect in making a strategy. और सर लाइक मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी कंपल्शन नहीं है. लाइक स्ट्रैटेजी बस एक एड ऑन फीचर है, बट इसमें क्या होता है? Then this question is valid. Yes. Why should people come to you? Why should they pay you? What's the value? Correct. They will get from you. So
वो जो let's वो take क्या an बोल रहे हैं example. कि have you validated the outputs with a prospective buyer? And Yes, no. This output and is willing to pay for this inside what you are showing. Is this valuable enough to pay money? See, one is saying that ऐसा कर दूंगा तो आप पैसा दोगे. एक है कि after you build the demo, then you take this output and say, if I give you this summary of these 3 items, will you pay money and how much will you pay? That is a different aspect where you have to validate against what you have built as capability. In theory, you can say, I will do 15 things, right? But whatever you are able to demo, then you have to check whether he is willing to pay. So that is number one. Number 2 question is, see, those who do it officially like him, they already get this data from them. And many of those who don't do officially, will they even allow you to connect? There is a regulatory problem in this. We are not a trading platform. We are just an interface of him acting with another. The information goes online, right? Yes. So like at the end, AI is giving advice. Sir, we added disclaimer right there. It's just a co-pilot, not your pilot, not a pilot. So, मतलब ChatGPT भी देता ही है ना analysis. You don't understand the other aspect of it. See, there are half of the people do it off record, half of the people do on record with this Bitcoin business. Now, the off record business, people will not allow you to extract all this information. Policy issues. There is a regulatory problem, and that is where I don't know what kind of, so which customers you are talking. The one you do on off the record and the ones who do on the record. Let's validate that. That's the time. Thank you so much, team. Now I would like to call team TypeScript on stage. गुड इवनिंग मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताना चाहती हूँ. मेरी जॉब गुड़गांव में लगी है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करियर पॉइंट फॉर मी. बट प्रॉब्लम शुरू यहाँ से होती है. मेरे पेरेंट्स शेवगांव में रहते हैं, शेवगांव अहमदनगर. बट लाइक उनके रेगुलर मेडिसिन चलते हैं, उनको बीपी है, उनको शुगर है एंड मेनी मोर प्रॉब्लम्स. बट अब जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? उनके मेडिकेशंस उन्होंने लिए नहीं लिए ये कैसे समझेगा? वो लैब रिपोर्ट्स विजिट लाइक हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, लैब रिपोर्ट्स उन्होंने मंगाई, ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो अभी ठीक है. ऑनेस्टली मैं बहुत वरीड हूँ ये चीज़ के लिए. मैंने काफ़ी सॉल्यूशंस ट्राई किए. प्रैक्टो यूज़ किया, मेडिसिन्स मिल जाती है बट अवेयरनेस एंड अश्योरेंस नहीं है. अपोलो यूज़ किया, कंसल्टेशन मिल जाती है बट कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन या फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं है. देन आई यूज टाटा 1mg, मेडिसिन डिलीवर हो जाती है बट क्या उन्होंने मेडिसिन ली? क्वेश्चनेबल. गूगल मैप्स, लोकेशन तो शेयर हो जाएगी बट उनके लाइव वाइटल्स नो. एंड मोर और एप्पल वॉचेस भी है जो ये सारी चीज़ इंटीग्रेट करती है. बट इंडिया में 70% ऑफ यूज़र एंड्रॉयड यूज़र है. सो एवरीवन कैनॉट अफोर्ड एप्पल वॉचेस. सो हेयर व्हाट वी इनोवेटेड, दिल केयर. It is a unified care intelligence platform which binds care, insights, data and reassurance. ये एक फैमिली ऑनबोर्डिंग सर्कल है जहां आप आपके फैमिली मेंबर्स को ऑनबोर्ड करके आप उनकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो. इंफॉर्मेशन इन द वे उनका बीपी, उनका शुगर, उन्होंने मेडिसिन ली नहीं ली, एंड इफ एनी मेडिसिन इज मिस्ड बाय देम देन यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. सो आप उनको इन्फॉर्म कर पाओगे कि आपने मेडिसिन मिस कर दी है, प्लीज़ ले लो. एंड अब इमरजेंसी में यू विल हैव SOS एंड लाइव लोकेशन वाली थिंग. सो I will like to show you prototype first. Prototype, I mean we developed an app. So let's going through the app. And with this network knowing, we would just walk you through all the top 10 things we could. So let's see. Yeah. So this is our app dashboard. Here
I had logged into the app. You will see the dashboard. Here are quick actions. Quick actions include medication, step tracker, BMI calculator, health metric, family, emergency, wellness, and community. Let's go each insight one by one. So first you have medication. So here you will add your medicine. Here you can, okay, first add a medicine. You will enter dosage and current quantity. Current quantity इसलिए आज मेरे पास एक मेडिसिन है एंड वो 4 टैबलेट्स बची है. दैट मीन्स मुझे 4 दिन के बाद वो मेडिसिन को रिफिल करना पड़ेगा, बट मैं भूल जाती हूँ, तो उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेरे पास होना चाहिए. दैट इज डोलो 65, उसकी 3 टैबलेट्स 430 पे मुझे लेनी है एंड वो मेरी पेंडिंग है. सो वो लाइक एक नोटिफिकेशन देगा कि रन्स आउट ऑन 14th अप्रैल. सो यू विल हैव अ आइडिया कि मुझे ये मेडिसिन खरीदनी है. नेक्स्ट वन, वॉइस. ओके, नेक्स्ट वी हैव अवर स्टेप ट्रैकर. ये हमने गूगल फिट API से कनेक्ट करा है. ये ट्रैक करेगा आपके स्टेप्स एंड अकॉर्डिंग टू योर स्टेप्स कैलोरी बर्न्स, कितने किलोमीटर वॉक किया एंड टाइम. सो नेक्स्ट वी हैव BMI कैलकुलेटर. हेयर यू कैन कैलकुलेट योर बॉडी मास इंडेक्स. That's it. And next feature we have is health metric. Here we have all the data for medications, for step tracking, and then for staying hydrated. And now हम आपको दिखाते हैं कि फैमिली लिंकिंग कैसे होती है. We will copy the code, then log out. For security, okay, he will show you. Maybe there are security reasons. उधर दिखा दे. So moving to next. So why our solution is better? Because we implemented all these features. So moving next. The evidence, हमने रियल यूजर्स को ये ऐप दिखाया है एंड उनके फीडबॅक कलेक्ट करे. सो लेट्स सी. आता किती वय झाले, कधी औषध विसरले कधी डॉक्टरची अपॉइंटमेंट विसरते. मुलगा बाहेर गावी असतो, मुली पण आता सासरी गेल्या, काळजी वाटते त्यांना. त्यांचे फोन येतात, मुलाचा फोन येतो, आई औषध घेतलं का वेळेवर? अरे हो बाबा घेतलं. मी औषध घेतलं, त्यांच्या मोबाईलवर बरोबर सगळं जाते. त्याला पण आनंद वाटतो, त्याला पण खुशी होती काय आपलं वेळेवर औषध घेऊन राहिली. त्याची ती खुशी बघून मला पण आनंद वाटतो. मी पण आता बरोबर वेळेवर औषध घेते, डॉक्टरांच्या वेळा पण लक्षात ठेवते आणि बरोबर जाते. हमने तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है अभी. तो यदि व्हाट्सएप ग्रुप में खाना शुरू कर रही कि फैमिली के लिए खाना खा लिया वो अपडेट करना, हमें अपने सोशल मीडिया वजह से हमें पता चला उन्होंने आज कितना वॉक किया, उन्होंने उनका आज वीडियो वगैरह देखा है, लाइक हमें लाइव अपडेट की होना चाहिए. तो इसलिए वो कितना एक मेरे हिसाब से तो 300-400 आने चाहिए. Okay, let us pause for now. We have more 3-4 interviews. We will play later. So moving forward for our slides. Last 2 minutes for demo. So next,
मंथली एक्सपेंस हमारा 2 to 3 लाख हो सकता है, उसमें यूनिट कॉस्ट 50 to 90 रुपीज़ पर यूज़र और इन पर मंथ, एवरेज रेवेन्यू 250 रुपीज़ पर मंथ पर यूज़र, मार्जिन इसके हिसाब से हमारा मार्जिन 70 to 60% है इफ़ हमारे यूज़र्स 2K to 2.5K होंगे. सो व्हाट अबाउट आवर रेवेन्यू जनरेशन, हमने सब्सक्रिप्शन प्लान ऐड किया है, उसमें बेस्ट प्लान है 499 रुपीज़ पर ईयर फॉर वन फैमिली, उसमें 4 मेंबर्स रहेंगे. इफ़ यू वांट ऐड more peoples to in family, so we there for that there are different plan add-on member that is for 99 rupees per person, and premium option for 4500 rupees per for lifetime per family. So और revenue generation हम कैसे करेंगे हमारा, तो हम ऐड करेंगे गूगल एड्स, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस, तो इस हिसाब से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा. तो उसमें नेक्स्ट है गो टू मार्केट स्ट्रेटजी. सो उसमें सबसे फर्स्ट फेज रहेगा वर्ड टू माउथ. तो उसमें सब फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स, तो उनके ऑर्गेनिक ग्रोथ. नेक्स्ट ऑन ग्राउंड रीच, हमारे सोसाइटी में सोशल अवेयरनेस के लिए कैंप्स होते रहते हैं, तो उनके थ्रू हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं. डिजिटल चैनल, आज छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो उनके थ्रू हम हमारा मार्केट बढ़ाएंगे. और लास्ट इज़ कॉरपोरेट पार्टनरशिप, जैसे हम ज्वाइन करते किसी भी कंपनी में, तो हमें एश्योरेंस का ये मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो हम वैसे ही दिल केयर वेलनेस बेनिफिट हम प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आप सोचते होंगे फर्स्ट टाइम कस्टमर्स हमारे कौन रहेंगे, तो हमारे फर्स्ट टाइम कस्टमर्स हमारे ट्रस्ट मेंबर्स रहेंगे, जैसे कि फैमिली मेंबर्स हो गए, क्लोज फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप से हम जा सकते हैं हमारे फर्स्ट 10 कस्टमर्स से, ऑफिस कलीग्स, और यहाँ पे सब जो MVPM के हॉस्टल्स के लोग हैं, जो हर कोई अपने फैमिली से दूर पढ़ाई करने के लिए आया है, कोई जॉब करने के लिए आया है, तो ये इनमें से कोई हमारा फर्स्ट 10 कस्टमर्स रहेगा. We would be moving towards the Q&A round. Okay. Thank you so much. Welcome. So, good thought, but the problem, right, is that I'm coming from a situation where I use all of these tools on the Apple platform. Yeah. And Apple provides me, if my father is wobbly, उनको Apple Watch पहना दिया, सी आप लोकेशन ट्रैकिंग करोगे, कैसे करोगे, फ़ोन से ही करोगे, और खुद आपकी कोई डिवाइस तो है नहीं, फिर उसको भी चार्जिंग का झंझट और एक और डिवाइस. सो अगर आप, if I look at my dad, I was looking at, he's 77, I put it on, अगर वो wobbly walk करते हैं, it should notify me, which you cannot do in your app. Correct? Second thing is that when you're integrating so much, have you taken the effort to check how much is already there in Apple Health? Because आप बोल रहे हो मैं ब्लड प्रेशर है ये इंटीग्रेट करूँगी, Omron का डिवाइस है जो ब्लूटूथ से सीधा Omron ऐप से लिंक करके अगर रोज सुबह अगर वो अपना ब्लड प्रेशर लेते हैं, मैं मेरा लेता हूँ, और वो ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ से आ जाता है और मेरे एप्पल हेल्थ में सिंक हो जाता है, वहाँ से मेरे विदिंग्स ऐप में सिंक हो जाता है, वहाँ विदिंग्स ऐप से मेरे अल्ट्रा ह्यूमन में सिंक हो जाता है. सो एक सोर्स एप्पल हेल्थ, उसके थ्रू सब है, यही गूगल के ऊपर भी चलता है. सो लॉट ऑफ स्टफ दैट यू हैव डन इज़ एक्चुअली अ रेपिटेशन. हाँ, ग्लास कितने पानी पिया वो नहीं होता, राइट, बट अगर आप फोटो खिंचवाएंगे पानी का तो AI से आप वो पिकअप कर सकते हैं. बट देन इज इट गोइंग टू बी अ वाटर काउंटिंग ऐप कि कितना पानी मैंने पिया? नो, बट देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन एंड देयर इज, आई मीन, यू आर डूइंग थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी डन. यू आर नॉट, आई एम यूजिंग दिस, सो आई एम टेलिंग यू दैट. But everyone cannot afford Apple in India. Okay. But we implemented like हमारा MVP है इमोशनल नज, क्योंकि हमारे पेरेंट्स लाइक दे विल फील गुड अगर उनको ये समझा कि उनके बच्चे या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स उनको अपडेट, लाइक हम वर्किंग प्रोफेशनल है और हम ऑफिस वगैरह में बिजी रहते हैं, मेनी टाइम्स हम मिस कर देते हैं उनको अपडेट करना हेल्थ रिलेटेड. सो इफ़ इसमें भी अगर हमने उनको अपडेट किया तो दे विल फील गुड एंड वो अपना ख्याल रखेंगे. एंड सर, मोस्ट ऑफ द एप्स आर ऑल डेटा सेंट्रिक. हमने UI बनाया लाइक टू बी मोर ऑफ इमोशनल लेयर.
तो लाइक पेरेंट्स के लिए फर्स्ट UI फर्स्ट हो कि एवरीवन शुड एक्सेस इट। और आपने बताया मार्जिन 60-70%, सो दैट इटसेल्फ यू नीड टू वैलिडेट। नहीं, हमें हमारा 60-70 यू सेड ना, तो वॉट एवर इज योर अजम्पशन जो भी है, इफ यू फील कॉन्फिडेंट 67 वेरी नाइस, यू शुड गो एड। बट एक और इसमें बिजनेस मॉडल होता है कि हाउ मेनी केसेस यू विल से दिस इज़ फ्री ऐप फॉर एक्सपीरियंस। वो आपने बिल्ड किया कि इतने लोगों को मैं फ्री में दूंगा, आई विल नॉट चार्ज। सेकेंड पॉइंट, पहले आप यदि इतना बना लिया है ऐप, डोंट अलाउ इट टू गो वेस्ट, एटलीस्ट स्टार्ट यूजिंग विद इन योर क्लोज ग्रुप। उतना तो यूज़ करना चालू करो, बिकॉज इफ यू पुट सो मच टाइम एंड एनर्जी, वॉट एवर थॉट इट ओवरऑल गुड, यू पुट ऑल थिंग्स एट वन प्लेस। डोंट अलाउ इट टू कि बिजनेस बनेगा नहीं बनेगा, बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, बट स्टार्ट तो कर दो इसको। श्योर। एंड वन मोर थिंग, हमारे पास फ्री सब्सक्रिप्शन भी है, बट उसमें लिमिटेशंस है, लाइक ओनली 2 members कैन ज्वाइन फॉर दिस ग्रुप। उसमें वेरिएबल्स कनेक्ट नहीं होंगे, ये सारी Last 1 minute for Q&A. And एक चीज़ for even all the other startups, right? I've just noticed that everybody is trying to tap their family. कि मेरे फैमिली को पहले करूँगा, फिर मेरे नेबर्स को पहले सेकंड करूँगा, फिर मेरे बिल्डिंग में, मेरे कम्युनिटी में। सो आई विल गिव अ वेरी वेरी क्विक एग्जांपल। दिस इज़ द वर्स्ट वे टू बिल्ड अ बिजनेस कि आप चालू वहाँ से करते हो कि बगल से आने लग जाए। इट्स ओके टू टेस्ट, बट इट्स द वर्स्ट वे। एंड आई गिव यू ए क्लासिक एग्जांपल। माय डॉटर वाज 15, करेक्ट? उसको बिजनेस करने का इंटरेस्ट था, तो शी सेड मैं कुकीज़ बनाती हूँ और बिल्डिंग के अंदर कुकीज़ देती हूँ। माय वाइफ सपोर्टेड, आई सेड चलो करने दो। सो शी डिडंट कैलकुलेट हर कॉस्ट, शी डिडंट कैलकुलेट एनीथिंग। People out of being in my apartment complex and knowing that my daughter is supplying said, हाँ मेरे को एक पैक भेज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 3 weeks the business ran. 3 weeks the business ran. She felt very good. 15-year-old kid felt very good कि हाँ भाई चलाया. But the problem was that, and this is my way of telling her to let her fail, because बाहर से तो you've not built up a market of how to go to market. You're only, it's okay to test with your internals. Remember, the feedback is not genuine. It is a biased feedback that you will get. Biased because your parent, अच्छा मेरी बेटी ने बनाया है, अच्छा है, मैं try कर लेती हूँ. That's not the feedback you want. And this is for all the startups. It's not just for you. जिन्होंने भी सोचा है close circle को करूँगा, पहले उसको चौकड़ी मारो. पहले जाके डिफ़िकल्टी वाले लोगों को ढूंढो, जहाँ पे आपको जाके जूते घिसाने पड़े और उनको ऐप इंस्टॉल करवा के यूज़ करवाना पड़े. That is the thing. Okay. This is not just for you, it was for everybody since you are the last startup, so you got it in the end. Okay, thank you.